So that the OLS estimate of beta, that is beta hat x transpose x inverse x transpose y, is beta hat is equal to all this in matrix form. Let's have a look at that, right? So we have the k variable sample regression function. Yi equals to beta 1 hat, beta 2 hat x to y plus beta 3 hat x3i plus beta k hat xki plus ui hat. So this is the sample regression function in k variable sample regression function, right? And this can be written in matrix notation also. In place of yi, I can write y1, y2, so on to yn. Right, is equal to, this is the same thing which we have written yesterday also. 1. So we are writing all the x's now in this. x21, x31, xk1, 1, x22, x32, xk2, so on to 1, x, this should be x22, no? Yeah, this should be x2n. x2n, x3n, xki. Right? I'm writing all of this in the matrix form. This is beta 1 hat, beta 2 hat, and so on to beta k hat. मैं इसको और सिंपल तरीके से लिखता हूँ, समझाता हूँ. एक सेकंड रुको तुम लोग बस. Some of you might have a problem in understanding ये क्या लिखे जा रहा है. So u1 hat, u2 hat, u3 hat. मुझे बस इतना बता दो. Do you understand this? That I can write in case if I am writing for the first observation. So can I write it for like this? Y1 equals to beta 1 hat plus beta 2 hat x21 plus beta 3 hat x31 and so on to beta k hat xk1 plus u hat 1. We can write like this. Similarly, y2, I can write like this: beta 1 hat, beta 2 hat x22, beta 3 hat x32, beta k hat xk2 plus u hat 2. Then you have yn, not yk. Yn, beta 1 hat, beta 1 hat plus beta 2 hat x2n plus beta 3 hat x3n, this is x here, plus beta k hat xkn
UN hat, और यहाँ पे भी ये UN hat है. Now you can understand that I have written these expression in terms of the matrix. This is what you have done. This is what you have done, beta. So now you just look at it. How many rows, how many columns? There are n rows, one column. Here you have n rows, k column. Here you have k rows, one column. N rows, one column. So I can easily write this as, in matrix notation, I can write this as y equals to x beta hat plus u hat, right? So this beta hat is the is your k by 1 column vector, or is the column vector of the OLS estimators of the regression coefficients, right? Acha, you tell me, how do I write the residual squares, some of the residual squares? हमने करा है नहीं, जब हमने 2 वेरिएबल वाला केस करा, 3 वेरिएबल वाला केस करा, जब हम स्केलर फॉर्म में कर रहे थे, नॉट इन द मैट्रिक्स नोटेशन, तो हम यही तो करते थे ना, हम रेसिडुअल्स का स्क्वायर ले लेते थे. Summation of ui hat square, summation of yi minus beta 1 hat minus beta 2 hat x2y and so on to beta hat k xki का स्क्वायर. और सिंपल तरीके से समझो, यही होता था ना बेटा, yi equals to beta 1 hat plus beta 1 hat plus beta 2 hat xi plus ui hat, right? सिंपल 2 वेरिएबल. तो ui hat में कैसे लिखता था? yi minus beta 1 hat minus beta 2 hat xi. इसका स्क्वायर करने के लिए भैया स्क्वायर कर दो, सम लेने के लिए सम ले लिया. अब वही के पैरामीटर मॉडल में हमने के की तरफ बढ़ा दिया इसको, यही तो करा और कुछ नहीं करा है. हाँ, अब इसी चीज को अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, आई हैव टू राइट दिस इन द मैट्रिक्स फॉर्म. This is one, this is RSS, residual sum of squares. Residual sum of squares. अच्छा, अब ui hat square को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ui hat square को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा? u hat transpose into u hat. बेटा u hat क्या है? कॉलम वेक्टर. u1 hat, u2 hat, so on to un hat. यही करा है ना अभी ऊपर. We've done this thing only. This is a column vector. U hat transpose क्या है? u1 hat, u2 hat, un hat. इसका ट्रांसपोज ले लिया. अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो यही आ जाएगा, u1 hat into u1 hat square plus u2 hat into u2 hat square and so on to un hat into un hat square, and this is going to be summation of ui hat square. Right? Summation of ui hat square. अब मुझे बताओ, in matrix form हमने कैसे लिखा था? y equals to
एक्स बीटा प्लस यू हैट, ऐसे लिखा था ना। तो अब यू हैट को कैसे लिखो, ये हम लिख चुके हैं बेटा, y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एक्स बीटा हैट प्लस यू हैट, राइट, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब यू हैट को कैसे लिखें, यू हैट इज इक्वल टू ये, दिस इज एक्स बीटा हैट, एक्स बीटा हैट, राइट, ओके। यू हैट ट्रांसपोज इनटू यू हैट कैसे लिखें, अब ये जो हमने लिखा है ना, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है ना सब कुछ। यू हैट ट्रांसपोज का क्या मतलब है, y माइनस एक्स बीटा हैट का ट्रांसपोज इनटू यू हैट, इनटू यू हैट। हाँ, अब इसको कैसे लिखें बेटा, सो इसको अगर हम इसको वो करें, हाउ कैन वी राइट दिस, कैन आई राइट दिस एज, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, y hat transpose, right, this is going to become what, y hat transpose. acha, when you this is the property of the transpose, ट्रांसपोज की ना प्रॉपर्टी होती है ये, जैसे अगर मैं कहूं एक्स बीटा हैट ट्रांसपोज, दैट इज बीटा हैट ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हैं। अब मैं इस एक्सप्रेशन को खोल रहा हूं, इसके ट्रांसपोज वाली एक्सप्रेशन को खोल रहा हूं, तो y का ट्रांसपोज y हैट माइनस एक्स बीटा हैट का ट्रांसपोज, एक स्टेप और लेता हूं so that you understand it clearly. X beta hat का ट्रांसपोज बीटा हैट ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। हाँ जी बेटा, हाँ, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, y हैट y, ठीक है, माइनस माइनस y हैट x बीटा हैट माइनस बीटा हैट x हैट y माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बीटा हैट x हैट, राइट, इनटू बीटा हैट ट्रांसपोज x hat into x beta hat. I've just multiplied this. I've just multiplied this. अच्छा, can you just have a look at this? What is this? इसको भी तोड़ें. Y hat x hat, not y hat x hat, y hat x, y hat x है ना? हाँ, y hat x beta hat. बेटा y क्या था? It was n by 1. तो y hat क्या होगा? 1 by n. Right? Okay. x क्या था? n by k dimensions थी. This is n by k. Okay. Beta hat क्या था? n by 1. No, beta hat क्या था? k by 1. Sorry. K by 1. Sorry. K by 1. K by 1. हाँ जी बेटा, तीनों की डायमेंशंस लिख दी और सुंदर तरीके से लिख लें. ये सब कंफ्यूज मत हो दोनों. y hat x बीटा हैट. y hat की डायमेंशन 1 क्रॉस n, x की डायमेंशन n क्रॉस k, बीटा हैट की डायमेंशन
k क्रॉस 1। तो ये बेटा y क्रॉस n इंटू n क्रॉस k क्या बन गया, 1 क्रॉस k, और ये 1 क्रॉस k इंटू k क्रॉस 1 क्या बन गया, 1 क्रॉस 1। सो दिस इज अ स्केलर, this guy is a scalar. Similarly, even this is a scalar, beta hat cross x cross y. बीटा हैट क्या था, k क्रॉस 1। व्हाट इज बीटा हैट, बीटा हैट डैश 1 बाय k। x क्या था, n बाय k। x हैट क्या होगा, k बाय n। y क्या था, n बाय 1 क्रॉस k इंटू k क्रॉस n क्या बन गया, 1 क्रॉस n, और 1 क्रॉस n इंटू n क्रॉस 1 क्या बन गया, 1 क्रॉस। So this is the point. This is the point. Can I rub this? I'm rubbing this. This is not required. So लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि ये जो आया है ना y क्रॉस बीटा या x क्रॉस बीटा, ये स्केलर आ गया, ये बीटा हैट क्रॉस बीटा हैट dash x hat y, this is coming out to be a scalar. Both of these are scalar. ये बताने की बात थी यहाँ पे, ठीक है ना। ये बताने की बात थी यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य क्या कि मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y hat y माइनस, अब ये तो बस दो नंबर्स ही तो बन गए हैं, ये तो आई कैन जस्ट राइट दिस एज 2 बीटा हैट क्रॉस x क्रॉस y। ये तो दो नंबर्स ही बन गए ना, स्केलर हो गए ये तो, बस इन दोनों को ऐड कर दिए तो स्केलर ही बन गए। 1 क्रॉस 1 के, जस्ट 1 क्रॉस 1 के स्केलर ही तो है, और क्या है ये। एंड प्लस बीटा हैट डैश x हैट x बीटा हैट। एक लाइन लिखेंगे, सिंस बीटा हैट डैश x dash y is a scalar, रियल नंबर है भैया, is a real number. It is equal to the transpose of y hat x beta hat, y hat x beta hat. ये बात आई समझ बेटा, तुम्हें ये बात आई समझ में कि मैंने इसको u hat dash u hat की वैल्यू ये निकाल लिया अभी तक। We have already found this out. अभी तक हमने ये निकाला, we have found this thing out, that is u hat dash u hat is equal to all this, u hat dash equals to u hat equals to all this. Fair enough. अच्छा अब मुझे बताओ, don't you think that this is this expression which you have got, u hat dash u hat, this is the matrix representation of this guy. ये जो तुमने निकाला है, what I am trying to say is this, u hat dash u hat, which is equal to y dash y minus 2 beta hat dash x dash y plus beta hat dash x dash x beta hat is the matrix notation of
बेटा आता है पेपर में, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो रिकॉर्डिंग्स है वो देखी हुई है, तुमने अपने सेमेस्टर में भी करा हुआ होगा, आई एम श्योर। तो उसी का बस मैट्रिक्स का पार्ट है शुरू। इज द मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ दिस गाय। Summation of ui hat square of ii minus beta 1 hat minus beta 2 hat x2i plus beta hat k xki का स्क्वायर, राइट। यही तो है। अच्छा, स्केलर नोटेशन में जब हम इसको करते थे ऐसे, तो हम क्या करते थे, वी ट्राई टू एक्चुअली फाइंड, वी ट्राई टू मिनिमाइज this summation of ui hat square as much as possible. This is what we try to do. So and when we do that, what we actually used to do, हम ये करते थे ना बेटा, del of summation of ui hat square अपॉन डेल बीटा 1 hat, हम ऐसे करते थे। मैं दो के लिए लिखता हूं, उसके बाद मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा, इसको मैट्रिक्स में लिख दूंगा, ठीक है। दो के लिए लिखते हैं बेटा, तो समेशन ऑफ yi minus beta 1 hat minus beta 2 hat x2i at k xki into -1 equals to 0, ऐसे लिखेंगे ना, we'll be writing it this way only। अब जब इसको खोलेंगे बेटा, तो ये जो -2 है तो चला जाएगा, माइनस क्यों लिखा, बिकॉज बीटा 1 हैट से जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम माइनस है ना यहाँ पे, तो इसलिए माइनस कर दिया। अब जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, summation of yi minus beta 1 hat तो कांस्टेंट है, इट इज n beta 1 hat minus beta 2 hat summation x2i minus and so on to minus beta hat k summation xki equals to 0। और इसको कैसे लिख सकते हैं, summation of yi equals to n beta 1 hat। देखो ये सब करने के लिए ना पेशेंस चाहिए, और पढ़ाइयां बिना पेशेंस के नहीं होती हैं। तुम्हें लग रहा हो कि भैया 2 मिनट का वीडियो बन जाए, कुछ चीजों में नहीं बन सकता, कुछ चीजों में बन सकता है, कुछ में नहीं बन सकता। तो जब नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, क्या फर्क पड़ रहा है, जो है वो करना तो है ना। और तुम लोगों को भी काम भी क्या है, तुम्हारी लाइफ में तो सिर्फ पढ़ाइयां ही है, तो पढ़ो और अच्छी तरीके से पढ़ो। मुश्किल तब होती है जब हम अपना काम उस इच्छा से नहीं करते जिस इच्छा से हमारे को करना चाहिए। और एक बात बताऊं बेटा, किसी को भी ना अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती, आई एम टेलिंग यू दैट। सबको ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही पैसे आ जाए, अगर ऐसे ही पैसे आने लग जाए तो कोई काम ही ना करे, मैं बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूं। लेकिन काम एक ऐसी चीज है जो तुमको जिस समय भी तुम अपने काम करने बैठे हो, उसको जितना अच्छी तरीके से कर पाओ वो करो। तुम सब जो भी ये शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अराउंड 20-21 ईयर ओल्ड, मोस्ट ऑफ यू 99.9% पीपल जो भी ये देख रहे हो, शायद तुम लोग अभी सिर्फ पढ़ाइयां कर रहे, तो वही तुम्हारी जॉब है। ठीक है, तुम्हारे को पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन किसी के पैसे लगे तो हुए हैं तुम्हारी पढ़ाइयों के लिए। तुम्हें अपना काम अच्छी तरीके से करना है, और जो भी व्यक्ति जिस समय जो काम करना होता है वो उस समय अच्छी तरह नहीं करे, उसको अच्छा फल नहीं मिलता बाद में। आई एम टेलिंग यू दिस राइट अवे। हालांकि तुमने मुझसे पूछा नहीं है, बट मैं फिर भी तुम्हारे को ये एडवाइस दे रहा हूं कि दिस इज रिक्वायर्ड। beta 2 hat summation x to y
इसको अब जनरलाइज कर देंगे हम लोग एक्स के आई, और जब बीटा टू हैट के साथ जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस एक्स टू आई बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 1 इंटू 2 तो चला गया उधर 0 से, और जब इसको एक्स टू आई के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई एक्स आई माइनस बीटा वन हैट summation of x to y, right, plus, sorry, not minus beta 2 hat summation of x to y square, so on to minus beta hat k, ठीक है, your x to y x k I equals to 0। इसको और ठीक से लिख दो, is equal to beta 1 hat summation x to y plus beta 2 hat summation x to y square plus beta 3 hat summation of x to y x3i, so on to beta k hat summation of x to y x k I equals to, sorry not equals to this। अब ऐसे ही तुम लोग डेल समेशन ऑफ यू आई हैट स्क्वायर अपॉन डेल बीटा 3 हैट निकाल सकते हो, डेल समेशन ऑफ यू आई हैट स्क्वायर अपॉन डेल बीटा के हैट निकाल सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उन सब चीजों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। कैन यू जस्ट have a look at these two expressions, this one this one, and this one, xki x3i, right, xki x3i, और जब हम इसको k के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें, so when we'll be differentiating this with respect to k, तो हमारे पास क्या आता है, समेशन ऑफ, so this is yi x2i था ना, ये xi लिख दिया है मैंने, this is x2i x2i ki beta 1 hat summation of xki beta 2 hat summation of x2i xki plus beta 3 hat summation of x ki and so on to beta hat k summation of xki square। अब जरा मुझे एक बात बताओ, once you have written it like this, once you have written it like this, can you write this in the matrix form? Yes, you can. Yes, you can. ठीक है, इससे क्या आएगा, n summation x to y so on to summation xki, यहाँ पे क्या आएगा, summation
x to y summation x to y square summation xki, not xki, x, हाँ ठीक तो है, xki x3i x2i, मैंने क्या करा है, x2i, बेटा 2i है, ये ना बहुत ध्यान से x2i हमने तो सही लिखा था, तो उधर क्यों गलत लिख दी, ओके यहाँ पे सही लिखा था, शुड बी इट इज x2i xki, और फिर यहां से xki x2i xki xki square, beta 1 hat beta 2 hat beta k hat। अभी तुम देखो पूरा तुम्हारा RHS पूरा का पूरा इसी से आ गया, नहीं, n beta 1 hat plus beta 2 hat summation x2y and so on to beta k hat summation xk जो ऐसे आ रहा, ओके, इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट ऑल दिस, here I will be writing this as x prime 1 1 so on to 1 x2 1 x2 2 so on to x2n xk1 xk2 so on to xkn y1 y2 and so on to yn। तुम अगर ध्यान से देखो तो सही करा, y1 plus y2 plus so on to yn, उसका sum you've taken it here, that is what summation of yi is ना। summation of yi का क्या मतलब होता है, summation of y1 plus summation of y2 and so on to summation of yn। summation of yi x2y का क्या मतलब होता, summation of y1 x21 plus बेटा summation of yi x2y का क्या मतलब होता, summation of y1 x21, not summation, y1 x21 plus y2 x22 plus y3 x3 2 whatever इस तरह से x23 and so on। मैं लिख के भी दे देता हूँ बिकॉज ये ना थोड़ी सी चीजें हो जाती हैं, सो वी कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस। सो क्या होता, y1 x21 plus plus your yi x2y now, so it is y1 x22 like this. So you'll be multiplying all of this. Okay, so this is your k by n, this is your n by 1. Okay, so y2 x22 and so on, इस तरीके से चलेगा। So it is going to function like this, all of this. Okay, what is this matrix? This is x cross x, x dash x matrix, x transpose x matrix. This is beta hat matrix. This is x transpose matrix. This is y matrix.
दिस इज वाई मैट्रिक्स. सो ऑल ऑफ दिस, ये जो तुमने करा ये सारा का सारा कहां से आ रहा है? यू आर मिनिमाइजिंग द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. So all of this could be compactly written as x cross x beta hat equals to, not x cross x dash x into beta hat is equal to x dash y. x dash y. तो अगर तुम x dash x के कुछ फीचर्स देखो, x dash x के फीचर्स देखो. So one, मेरे साथ साथ लिखेंगे, it gives the raw sum of squares and cross products of the x variable. ये जो टर्म्स है ना ऑन द मेन डायग्राम, ये सारी की सारी हमारे को रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स दे रही है, राइट? ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. रॉ का मतलब है यहाँ पे ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. और ये सम ऑफ स्क्वायर्स दे रही, राइट? सो ये स्क्वायर कर रहे हो और इसका सम, सो इट इज गिविंग यू रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एक्स वेरिएबल्स. x2 का x3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, उनका सम, राइट? ऑल दैट is also, they are also giving you. Second, it is symmetrical क्यों कह रहे हैं हम ये सिमेट्रिकल है? बिकॉज जो क्रॉस प्रोडक्ट्स है ना, जैसे x2i x3i का क्रॉस प्रोडक्ट, वो x3i x2i का क्रॉस प्रोडक्ट है. नेचुरली तुम a इंटू बी करो, b इंटू a करो, बात तो सेम ही है. सो इट इज सिमेट्रिकल सिंस the cross product between x2i and x3i is the same as between x3i and x2i, right? And x cross x dash x का डायमेंशन क्या है? Your it is of the order k by k. It is of the order k by k. तो ये इस मैट्रिक्स के फीचर्स थे, ये इस मैट्रिक्स के फीचर्स थे. अब हमारे को यहाँ पे इसके बारे में पता है, हमारे को यहाँ पे x क्रॉस y के बारे में पता है. These are the known quantities, right? The cross product between the x and y variable is x dash y वाला, एंड हमारे पास एक अननोन है बीटा हैट. ठीक है, सो हमारे को बीटा हैट निकालना है. सो हमारे पास नोन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं?
एक्स डैश एक्स और एक्स डैश वाई, हमारे पास ये वैल्यूज है, हमारे को बीटा हैट निकालना है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा के रूल्स लगाने पड़ेंगे। अगर तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करते, बिकॉज बेटा वैसे तो सिंपल सी बात है ना, अगर मुझे बीटा हैट लिखना है यहाँ पे तो क्या होगा, ये एक्स एक्स डैश एक्स इसके नीचे चला जाएगा, उसको लिखने का क्या तरीका है कि एक्स डैश एक्स इनवर्स, बट उसके लिए पहले ये भी तो लिखना पड़ेगा ना कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? सो इफ, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी हैव x dash x beta hat x dash y, right? We have this. If x dash x inverse exists, अगर तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज तुमको समझ में आ रहा है ना, अगर मुझे बीटा हैट लिखना हो तो मैं क्या करता, ये x डैश x को इसके नीचे ले जाता, उसको कैसे लिखते मैट्रिक्स अलजेब्रा के रूप में, x डैश x का इनवर्स, लेकिन उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना, लिखना पड़ेगा। देन pre multiplying both sides by x dash x का इनवर्स, so x dash x inverse x dash x beta hat x dash x inverse x dash y। बेटा ये तो वन ही हो गया, x डैश x इनवर्स इंटू x डैश x, सिंपल भाषा में 1/a इंटू a, वन ही हो गया ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। दिस थिंग has become the identity matrix. This is the identity matrix. इसको वन ना सोच लेना, the matrix of ones, मतलब it's an identity matrix of the order k by k। ये मैं लिख देता हूं, चलो पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, राइट, x dash y, तो ये क्या है, it is an identity matrix of order k by k, of order k by k, ठीक है, हाँ, k by k ऑर्डर का ये है, तो ये k by k ऑर्डर का, बीटा हैट क्या, k by 1 ऑर्डर का, यू रिमेंबर बीटा हैट ना, k rows 1 column, k rows 1 column, k by 1 ऑर्डर का, x cross x inverse is again your k by k, x मैं बार बार इसको x cross क्यों बोल रहा हूँ, x dash x inverse is k by k, x dash is k by n ऑर्डर, x किस ऑर्डर का था, n by k, x dash किस ऑर्डर का है, k by n, y किस ऑर्डर का है, n by n, so ये भी क्या बन गया, k by k into k cross n, so this is k cross n, ये मिलके, और k cross n into n cross 1 is k cross 1, so these are equivalent, so this is what I wanted to say, your beta hat is x cross x inverse x dash x inverse x dash y, मैंने लिख दिया है इसके नीचे भी, it is k cross 1 k cross k k cross n n cross 1, like this. So this is what they say is the fundamental result
of OLS theory in matrix notation. Fundamental result of OLS theory in matrix notation. Right, beta? Chaliye. Thank you very much.